Hello, friends. So, I am again here with another lecture and another very important lecture because this is one topic where people are so confused. Sir, what to write? Sir, what not to write? Sir, essay is very confusing. Sir, I don't have any idea how to get good marks. I'm stuck in 90s or 100s in essay and I don't know what I need to do. Because I had written 12 pages, 11 pages, I had written this story, that story, so many things I am hearing out since I am in this line of mentorship since last 3 years. And trust me, after watching this video, a lot of confusions, lot of uh, things which are blocking your mind will be clear. Just listen to this video carefully and apply all the guidance which I am giving you through this video in your essays. And trust me, your marks will get better. There is always a way. ऐसा नहीं होता कि there is no way forward. Always there is a way forward. चलिए आगे देखते हैं. So पहली चीज बहुत important, the most important essence to write an essay and biggest sin if you are not doing this. पहली चीज क्या है? अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक. अब समझ रहे हो कि इफ द एसे वांट्स टू रिप्रेजेंट सम अदर मीनिंग और आपने कुछ और ग्रेस्प किया, इफ यू आर थिंकिंग इन सम अदर वे और इन सम अदर डायमेंशन, then your marks will drastically decrease in essay paper. This is one of the biggest sin that one can commit in essay paper. I will give you an example of this essay. That is, the process of self-discovery has now been technologically outsourced. This was an essay asked in the UPSC examination. Now, increasing role of technology in shaping how individuals explore and understand themselves is the essence of this essay. समझ रहे हैं? आपको टॉपिक को पहले समझना पड़ेगा कि कैसे इन nowadays how technology is trying to mirror ourselves. That is, what are our values? What are our strengths? What should we do in life? How we should conduct ourselves in daily life? How many hours I should put for study? How many hours I should put for sleeping? How many hours I am wasting in social media? Everything is being dictated by the technology. Even the meditation, which was meant to connect your mind to the nature, is being done through the through an app which is trying to make you mindful through a dictated technology. Now, this is the essence of this essay. If you are not getting the real meaning, if you are not getting the real core of an essay, then your marks will be drastically decreased. The people who are getting in 70s, 80s, 50s, 100% they have not understood the topic. This is quite clear. This is the biggest sin which one can commit in essay paper. Now, introduction. इंट्रोडक्शन से पहले मैं अगेन एक एग्जांपल लेता हूँ टॉपिक को क्लियरली समझने के लिए. जैसे कि एक और ऐसे का टॉपिक था, पैट्रियार्की इज द लीस्ट नोटिस्ड yet the most significant structure of social inequality. अब there is a tendency of students to simply break this. जैसे इसमें क्या है, एक कीवर्ड है पैट्रियार्की, अब पैट्रियार्की पे ऐसे आधा. Second keyword है social inequality. Now half essay will be addressing the social inequality part. Now essay topic needs to be understood completely. Don't break the topic. Address the theme. Don't address the keywords. ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है. This is committed by half of the students. अब इसका real meaning क्या था? Despite its subtle and often unnoticed nature, patriarchy has a profound impact on shaping social inequalities. Real meaning. अब ऐसा नहीं कि हम दूध के धुले हैं. We have also committed such mistakes in our attempts, and through our mistakes I am trying to give you some lessons which will help you to score better and better in the essay paper. तो
कहाँ पेट्रियार्की पे आप ऐसे लिखोगे, सोशल इनइक्वलिटी पे लिखोगे? फिर आप बोलोगे सर आई रोट 13 पेजेस, आई रोट दिस मैनी कोट्स, डेटा, एनेक्डोट। कोई मतलब नहीं है उन सब का। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टू अंडरस्टैंड, एंड व्हेन यू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल, डोंट हरी। पेन पड़ा है, एक टेंडेंसी है कि बस ऐसे शुरू कर दें। फर्स्ट अंडरस्टैंड, choose the topic wisely. Half of the work is that, and half of the work is what you put on the paper. ठीक है? एक नैरो व्यू भी होता है। नैरो व्यू क्या होता है? जैसे कैसे था, हैंड that rocks the cradle rules the world. So students started writing essay on mother and then shifted it to women. बस हो गया, यही इनका एक अंडरस्टैंडिंग था। Yeah, some students totally ignored the point of view of women and mother and just started talking about politicians, intellectuals, poets, leaders. ये भी गलत है। देखिए, if 100% of the portion is of essay, I will write 50% of the part for the women and mother. I will also later talk about the role of intellectuals. When I say intellectuals, then in the history, we have people like Chanakya. He was a giant of intellectual. We have poets like Kabir Das. We have rulers like Asoka. We have poets in the contemporary times like Ramdhari Singh Dinkar, Dushyant Kumar. They have shaped our society, nurtured our society, and the great leaders like Mahatma Gandhi and so forth. So उनका भी एक point of view add करना होगा इसमें, बट मिडिल पाथ रखना। इतना ब्रॉड ऐसे को नहीं ले जाना है कि वो संभाले ना संभले। इट शुड नॉट बिकम टू ब्रॉड। वी हैव लेस वर्ड्स, वी हैव लेस टाइम। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? UPSC in syllabus of essay says essay has to be written in an orderly fashion. That is, it is not bunch of scattered ideas, but a properly brainstormed arguments arranged in a flow that provides a takeaway from essay. मतलब पूरा ऐसे पढ़ने के बाद कुछ तो टेक अवे होना चाहिए जो उस चेकर को मिलेगा, या फिर बस सर ये नहीं होता कि सर दिस शुड बी डन बट दिस इज नेगेटिव, दिस शुड बी डन बट दिस इज नेगेटिव, सो वी कैन डू बोथ like this. If you are writing, there is no clarity of thought, and what you are writing is just a bunch of scattered ideas with no takeaways, and you will get an average marks, 100 marks, 102, 95, 97. Your whole rank is getting prospect of getting rank is ruined. Okay, now your idea should be arranged in a flow. What does it mean? You should not make a man standing on his head कि जो चीज़ें बाद में आनी चाहिए, यू आर राइटिंग देम फर्स्ट। लेट्स टेक द एग्जांपल। द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज़ नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। अब इसको मैं तोड़ूं तो पहली चीज़, व्हाट इज सेल्फ डिस्कवरी? अ वेल रीजन्ड एंड वेल informed person will first ask what is self discovery. Then second question will come in mind is how self discovery was done before. पहले कैसे किया जाता था? गुरुकुल्स में जाते थे, ध्यान लगाते थे, doing meditation. Siddhartha became Buddha, self discovery in sitting in below a tree and then meditating for years and years. तो ये चीज हो गई. Now how it has been technologically outsourced? Now the contemporary things which I had explained you. उसके बाद technologically या टेक्नोलॉजी हैज कंप्लीटली अल्टर्ड द वे ऑफ सेल्फ डिस्कवरी. क्या ऐसा हो गया है कि जो ओल्ड मेथड्स ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज बीन टोटली डिस्कार्डेड? ऐसा है क्या? लास्ट में आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड देन वे फॉरवर्ड. होना क्या चाहिए? अब ये मत बोल देना कि सर 50% ये 50, नहीं. यू हैव टू टेक अ स्टांस. कहीं पे यू विल शो अ बायसनेस, टेक अवे 60%, 70%. आप बोलोगे कि ओल्ड टेक्निक्स जरूरी है. क्यों जरूरी है बताऊंगा मैं इसको. जैसे द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड. अब कैसे ऐसा होगा कि 50-50 बोलोगे? क्योंकि टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन वे ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड नॉट वाइस वर्सा. ठीक है, अगर आपको इनोवेशन सोसाइटी में चाहिए, चीज़ें करनी है, ठीक है, आपको बदलाव लाना है, ब्रेक थ्रू लाना है, एंड द cognition power of human being has to be maintained, then the older methods of self discovery has to be preserved. The habit of reading books has to be preserved.
The shorts and the reels cannot replace the old methodology. ऐसा नहीं है कि टोटली डिस्कार्ड कर दो टेक्नोलॉजी को, बट इट द टेक अवे शुड बी हैवी इन 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 प्लेस ऑफ द ओल्ड मेथड्स. ठीक है. आर्टिफिशियल बैलेंसिंग इज नॉट अप्रिशिएटेड एंड रिक्वायर्ड इन एसे. अब इंट्रोडक्शन पे आते हैं. दीदी ने, जिनके इंस्टा में लैक्स ऑफ फॉलोअर्स हैं, उन्होंने एनेक्डोट लिखा था. ठीक है. सी सो पॉपुलर. हर रोज मैं जब यूट्यूब देखता हूँ, देर आर सो मेनी रील्स एंड देर आर लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स प्लेइंग इन बिहाइंड एंड आई एम फुल चार्ज अब यही बनना है. ठीक है. चाहे कुछ भी हो जाए, एनेक्डोट तो लिखेंगे ही. चेकर वाइलेडिंग योर एसे आ गया एक और कोचिंग का, दवाई लेके, पैरासीटामोल लेके, अब लो मार्क्स बेटा 80-84, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा. आई एम नॉट सेइंग डोंट राइट एनेक्डोट्स, but if it is of good quality, then it is fine. Don't frame useless stories like Rahul wake up in morning, Apple Watch showed the goals of the day, and this and that. That seems too boring and too naive, to say the least. Why bound your imagination? We can simply start from a quote. अगर वो फिट हो रहा है तो. ये नहीं कि सोशल मीडिया पे आई हैव क्रैम्ड दिस कोट देन आई विल राइट दिस, और अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन, और सम एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग पैराडॉक्सिकल डेटा. ठीक है. पैराडॉक्सिकल क्या मतलब होता है कि एक हैंड पे विमेन जो है उनका जो GER है दैट इज इंक्रीजिंग, बट ऑन अनदर हैंड पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे बता रहा है कि उनका जो लेबर पार्टिसिपेशन वो डिक्रीज हो गया. ये पैराडॉक्सिकल डेटा हो गया. और करंट कॉन्टेक्स्ट, कोई एग्जाम्पल, कोई चीज़ हुई है रियल में. चूज द बेस्ट आउट ऑफ दीज. डोंट गो विद अ केमिकल फॉर्मूला फॉर एसे. एक पेस्टल अप्रोच की बीमारी है. अब पेस्टल अप्रोच पे ऐसे लिखोगे कभी ज़्यादा नंबर आते नहीं है. ठीक है. इट इज़ हैपनिंग सिंस 2018-17. इट्स जस्ट दैट दे हैव स्टार्टेड पनिशिंग मोर द पेस्टल अप्रोच इन लास्ट 2 years, बट अच्छे मार्क्स तब भी नहीं आते थे पेस्टल से. सो पेस्टल अप्रोच इज व्हाट? इट इज जस्ट अ वे टू लुक एट द टॉपिक फ्रॉम वेरियस लेंसेज. एक ही चीज़ को आप सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, आर्गूमेंट तो सेम ही है ना. It cannot be the structure to write an essay. You're just writing endless examples from various angles. It becomes repetitive and boring, and there will not be any argument, only examples left in the essay. So it is a sin to just use pestle and write an essay. ये दिमाग से निकालो. This is killing your creativity, imagination, and that's why the people who are getting good score in GS, they are obsessed with their general studies knowledge. They write too much data. They write पेस्टल अप्रोच, वो सिक्योरिटी की, एथिक्स की, पॉलिटी की, इकोनॉमी की नॉलेज निकाल देते हैं. इसलिए ऐसा हो रहा है, जो जिनके जनरल स्टडीज में दे हैव लेस नॉलेज, दे आर स्कोरिंग गुड इन एसे बिकॉज दे आर नॉट बाउंड बाय दिस इमेजिनेशन ऑफ पेस्टल एंड देयर GS स्पेसिफिक नॉलेज. थिंग्स दैट शुड बी अवॉइडेड इन एसे, ये तो करना ही नहीं है. बॉम्बार्डिंग फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स इन अ पैराग्राफ. ये कि मतलब एक ही में पूरा, आप तो पूरा एजुकेशन पर रट के आया हूँ, ASER रिपोर्ट सब उगल दूंगा, नंबर एकदम चेकर उठेगा. वाह, व्हाट अ माइंड, व्हाट अ रीजन माइंड, इतने फैक्ट याद कर लिए, क्या क्या डेप्थ है. ठीक है. एग्जामिनर विल सिंपली लूज द इंटरेस्ट. सेकंड, डोंट लूज द पाथ आफ्टर 3-4 पेजेस. 3-4 पेजेस के बाद वो अपनी ही कहानी, अपनी दुनिया में नहीं, वो खुद ही एवरीवन विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक एन ऑथर. मुंशी प्रेमचंद सबके सब. ठीक है. एंड फिर जब लास्ट 2 पेजेस बनते हैं, देन यू आर बैक टू द टॉपिक. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट बाउंड योर एग्जाम्पल्स पॉइंट्स बाय GS नॉलेज. सिंपल एग्जाम्पल लिखो ना, सिनेमा, पॉप कल्चर, सिंपल थिंग्स. व्हाई यू आर बाउंडिंग योर इमेजिनेशन, योर थॉट्स, योर पर्सनैलिटी टू जस्ट योर GS नॉलेज. लास्ट, व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू राइट हैज अ गैप. मैं बहुत सारी कहानियां सुन, सर मैंने ये लिख दिया था, वो लिख दिया था. ये ब्रिज करना है ना. बिकॉज ऑफ योर राइटिंग स्किल इज नॉट अप टू द मार्क, व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू राइट हैज अ लार्ज गैप. अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू गेट मार्क्स. एग्जामिनर बोलेगा अरे कहना क्या चाहते हो, क्योंकि आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, लैंग्वेज है, वो जो आप पेन एंड पेपर पे ला रहे हो, जो माइंड में सोच रहे हो, उसमें वाइड गैप है. और अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है, देन यू हैव टू राइट मोर एंड मोर एसे. To bridge this gap you have to write. And someone naturally endowed with the good writing skill, उनके लिए मैं नहीं बोलता, उनके लिए brainstorming if they will do, they have a natural art of writing good things. ये आंसर नहीं है पहली बात. essay is a well reasoned in depth arguments, ठीक है, given with substantiated with example, written in an orderly fashion with a beautiful language
and also it has certain tone. if the S is paradoxical कि ये है मतलब पेटियर की है लेकिन दिख नहीं रही है, ये पैराडॉक्स है, तो आपके टोन में भी वो पैराडॉक्स दिखना चाहिए. इतनी माइन्यूट थिंग्स do make a large difference. It's not about how much knowledge you have. जिस साल मेरे when I got the highest one of the highest marks in GS, my essay marks was only 118 because I had committed the same mistake of just vomiting endless facts that I had grabbed and the GS knowledge, and that's why my marks decreased from 140 in essay to 118. This is a sin which I myself has observed, and I have seen my students, my friends do that, and that's why I want you all to not commit that. Keep this in mind. Surely it will help you. Trust in your abilities, trust in your writing skills. Don't try to apply a chemical formula, don't try to imitate some toppers. Just believe in yourself, be positive. Exam is very near. Take care of your health, you will do good. Take care, best wishes, and do well.